everything in this time. So I would like to welcome all of you again, and for more, I will just over to Rahul sir. Yeah, I'll just share one or two videos and Priyanka will take it forward. Yeah, it's about. These are some glimpses of our Guftagu, which is that was like a personal face-to-face meet. And recently we had a online also last week. So that was also well received. In fact, last few Guftagus have been houseful. In fact, in the physical format, I think last 8 to 10 Guftagus have been houseful. And it is always a small group meeting. So that's an advantage that we are having. And I'll just share another video. So Guftagu, the main impact of the Guftagu is economic and social well-being. So people are getting a lot of connections, impactful connections. They are also getting good knowledge and also mentoring. Like last month, we had the presence of Mr. Ashok Gupta, who is the MD of Shalimar Paints. And he had wonderful mentoring sessions with us. So that was really great for all the Guftagu members. So, and that's a regular feature on our Guftagu to not only discuss about connections, but also about skills and ideas. So let's see this video. It was first time being here and I thoroughly enjoyed. The entire session was very engaging. There was never a minute where I felt disengaged. More or less I was able to connect with everyone. I think the rounds of interaction which you all have had planned, it was very effective and engaging throughout. So I look forward to being here again. पता चलता है लोग किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं. सो वी गेट टू नो कि अगर हमारा माइंड ही स्टक है कि यार हमने इस तरह का कुछ सोचा ही नहीं है, तो आपका दिमाग काम करने लगा, अच्छा ऐसे भी हो रहा है, अच्छा इस कंपनी में ऐसे भी काम हो रहा है, मार्केट में ऐसे भी काम हो रहा है. तो यू कैन एक्चुअली गेट न्यू आइडियाज फॉर योरसेल्फ एंड बिल्ड सम ग्रेट कनेक्शंस, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट वैसे भी यू गेट एम्पावर्ड. और गुफ्तगू में प्रियंका जी और राहुल जी जस्ट बढ़िया तरीके से वो एक कनेक्टिविटी बता रहे हैं लोगों के बीच में. दैट इज वर्थ अमेजिंग. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट. So that's really great to interact with all of you. And this is our first endeavor to go to do the financial intelligence ki Guftagu. This is our first Guftagu, and hats off to all of you who are present today and being so committed in this during the weekday that you are here. So let's have a big round of applause for all of you. So now we will tell you the key highlights, what we'll cover today. We'll have, of course, the introductions by everybody, and then our expert is already there. So he will discuss more about how to create wealth and how to have enjoy the leverage of the Indian economy, because Indian economy is in the sweet spot. It is the fastest growing economy in the world today. The base that Indian economy is having, and the growth is very high, and next 10 years expected to be much higher. So we have the right person to guide about it. Then we'll also discuss something more about Guftagu so that you can take the more advantage about these topics in the coming times. Every month we have thought of having one Guftagu on financial intelligence. We'll call best of the best speakers so that we can get benefited, our community can get benefited. So now I'll hand over to Priyanka to take this forward. She will do the icebreaker session, and then we'll have round of introductions by each one of us, and then Sachin ji will guide us about the further how to create wealth. Yes, Priyanka, over to you. So thank you so much. As I welcome all of you, and Sachin ji, introduction आपको भी आज खुद से देना है क्योंकि गुफ्तगू के ये rituals हैं. We introduce each other. And तो वो चीजें अभी आप you will come to know how Guftagu formats are working here. And firstly, we will break the ice as all people are here
with great excitement. They will get something. So firstly, I will check their side what they have already. So it would be very easy for us to discuss and share the knowledge. So my first questions I'll put to everyone randomly, and you can answer. So my first question goes to Siddharth Gupta, because Yes. he our good loyalist. So Siddharth, you can see the screen. Yes. Cash analysis is done to ascertain financial visibility of a project. Do you have any idea what kind of? A financial analysis done to ascertain the financial viability of a project. Great, absolutely wonderful. So just keep clapping for all. Next question. Now we move to Dipesh Mutha. Dipesh, are you there with us? Yes, and yeah. So dash shows the changes in assets, liabilities, and net worth between two balance sheet dates. Which one is this? Is a cash flow, fund flow, ratio, or break even? Assets, liabilities, and net worth between two balance sheet dates. Nothing to worry. We have Cash flow. Sachin sir. Yes? Cash flow. No, it's a fund flow. Anyways, you attempted it very well. प्रियंका, आप काफी difficult questions पूछ रहे हैं. That's why Sachin sir is required here. Now it's very easy question. Who is this lucky one to take this up? So next to Indu Jain. Indu ji, Indu ji, हाँ जी मैम 50 times 5 is equal to 250 option. none of these Yes, that's great. Next question goes to Mr. Naveen Jain. Naveen ji, are you there? Again, a very simple question. How many digits are there in 1000? Naveen ji, anyone who want to take up this question, please take it. Raise your hand. I would like to say. No, you have already done. Sabha, Sabha, Miss Sabha Sajad is here. She can take this. Yeah, hi. So it's Yes. How many digits are there in 1000? Don't worry, Sachin sir is here. He will guide us. no, it's I work under such itself, so So how many digits? it's 2. Is it right or wrong, sir? I think it is 3 digits. Three Go ahead. digits. Yeah. Anyways, But I good think try. it's Well tried. it's a 4-digit number. No, it's a 3-digit number. Okay, next question goes to, wait a moment. A dash is an equilibrium point you have written. Which is the equilibrium point? So is it cash flow, Break-even. fund flow, ratio, break even? Who wants to answer? it's break even Yeah, I think- Induji tried twice. You got Say- this opportunity. Siddharth has also said right, and Induji also. So Right. they will get chocolates offline. Please come to Noida, Guftagu. You will get chocolates. Yeah, our each Guftagu is a chocolate or a gift for all of you. So just come and join us on 15. definitely Yes, the next question is financial decision involve investment financing, dividend decision, investment financing, sales decision, or financing dividend and cash decisions. Yes, it's question to Srilji. Srilji, are you there with us? Yes, ma'am. आप Yes, tough please questions take up पूछ this रहे. question. Yes, I Financial just decisions. For investment and dividend decision. वो ए लग रहा है मैम वैसे तो. correct, sir. बिल्कुल correct है. Absolutely correct. चलिए, thank you. Thank you so much. So next question to who will take this, sir? Can you name someone? I think
the person can take the initiative, those who want to be in the limelight. KP Okay. Singh ji is there. Singh Yes. साहब can answer. Try Yes. करने में कुछ नहीं जाएगा, Cost कोई of नुकसान नहीं capital होगा. refers to flotation cost, dividend, required rate of return, or none of the above. It seems very difficult for me, but still let me try. Yes, आप yes. फोन a friend कर सकते हैं. Yes. Cost of capital refers to, I think, इनको फोन a friend की जरूरत है. Required rate of return. Yeah, Yeah. anyone who can help. देखो, this is a platform where you can help each other and required be rate of connected. return. Required rate of return. Absolutely correct. सर लगता नहीं है फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है आपका. टेक्निकल स्मार्ट है आप. मेरा बिल्कुल नहीं है. Okay. Next question, sir. Rahul sir, you just name the person. I'll ask. Sandeep ji is there from the beginning. Sandeep Jain sahab can Sandeep. answer. Okay, okay. Which Yes. of the following is not a technique of financial analysis? Ratio analysis, risk analysis, cash flow analysis, fund flow analysis. I think ratio analysis. No, you missed it. It's a risk But analysis. काफी close है. देखिए Very close. R से रेशो होता है, R से रिस्क होता है. Risk होता है. ठीक है. It's again very easy question. Number one is very easy. So any of the sir, whom would you like to take up this question? One of our icons is also joined, Kamlesh ji from Varun Beverages. He Okay. is also there with us, so welcome. Now I will ask Arun ji to answer this. Arun ji is there It's from a very simple question, sir. अरुण जी के लिए हम कुछ अच्छा डिजाइन करेंगे. ये मोनिका आप ले सकते हैं. मोनिका is also with us. Monica, Monica, are you there with us? Okay. I think Okay. Neha wants to answer. Okay, Neha, please. तो नेहा Complete the वो मेरे sequence. साथ ही बैठी हुई है. My daughter, she is Okay. also learner of stock market. So she is saying 19. Great. Correct. Absolutely correct. It's a easy one, but it's really appreciable. And next question is very easy again. How many hours in a 90 minutes? सिद्धार्थ तो ले चुके हैं अपना क्वेश्चन. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे. हाँ, it's a very difficult question. So who wants to take this question? Please raise your hand. Deepak Batra is also there with us. Deepak ji. Okay. 1.5 hours. Absolutely correct. So these are the few easy one among the toughest also. So these are the few ice-breaking questions. The last two we have. So dash shows movement of cash into and out of the firm and its net effect on the balance sheet. Which one is this? Is a cash flow, fund flow, ratio, or break even? Singvi ji is there. Rajesh ji can answer. Yes, Rajesh ji, you can take up this question, please. You can try. You can try it out. Because I am not in finance, so I think it's a cash flow. Correct. Absolutely correct. Well Now done, it's very turn, Arun ji, you just take this question. Working capital turnover measures the relationship of working capital with which? Fixed assets, sales, purchases, or stocks? So anybody can answer. Just raise your hand. We'll give the opportunity. You can. Kamlesh ji, Kamlesh ji ने दिया था answer. It is turnover. It is sales. Wow. No, it's a wrong answer, sir. It looks like sales, but it's against fixed assets. क्योंकि टर्नओवर लिखा रहता है तो जनरली भी रिलेट की सेल्स होगी, बट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद फिक्स्ड एसेट्स. So thank you so much everyone for joining us and taking out the courage to take these questions based upon finance. Now over to Rahul ji for taking it forward. हाँ, ये एक्चुअली प्रियंका सीए जरूर है, लेकिन मैं इधर करेक्ट कर देता हूँ कि वरुण जी, कमलेश जी ने सही आंसर दिया. सेल्स should be the relationship. Sales divided by fixed assets is this working capital is the working capital turnover. So I think चलो we'll discuss it. हो सकता है maybe answer wrong हो.
हो जाता है फाइनेंस, तभी तो फाइनेंस जो है वो फाइनेंस है. So coming back, I'll just quickly introduce about Guftagu, and then we'll have the those who are here today. We'll have introduction of all of us. So Guftagu is now, with your love and support, it's a community of around 1,800 people, and our objective is to help each other by exchange of connects, skills, and ideas. And we are doing this since an year. Financial intelligence, Guftagu is for the first time that we are coming up. And it's so nice that all of you are here today with us on this weekday. And we have made this purpose to every month we'll have one Guftagu. And Guftagu is always a small group discussion, not more than 30 people. That is our objective, because small group interaction can really help us in learning from each other. That's why this is our mission, to empower lives by exchange of ideas, skills, and connections, and to add to the economic and social well-being. So इसके हमारे कुछ values हैं, जैसे givers get more. So let's start giving by working in the interest of the people. Learning with fun, जैसे आज हमने अभी एक experience किया ही है कि मुश्किल subject को भी एक easily हम लोग discuss कर रहे हैं आज. And sharing of knowledge, skills, then it is also into measurable outcomes, so that we can measure what kind of progress that we are having, and being compassionate and innovative. So that is what we stand for. And last month we had a very rocking month. We had 4 Guftagus. Out of those, 4 were physical Guftagus. All physical Guftagus happened last time. And this month we have taken a step, that is, let's have some online Guftagus also, because people from across India, they are joining, and worldwide. So March 3rd, we had around 30 people. We had an online Guftagu, and we have also recently launched other verticals in terms of Gujarat, Faridabad. We have also launched business automation ki Guftagu, with KP Singh ji is spearheading. Then youth mentoring is also recently launched. So we have also launched quarterly passes that you just pay 6,000 rupees and you can do unlimited Guftagus in next 3 months. Because physical Guftagus are always we charge, but on the cost basis only. Of course, there is no membership charge. So in the Guftagu, you can enjoy the Guftagu by being zero membership, but you are giving your investment in terms of your time, your skills and connections. Those are much more precious. So that's why Guftagu is just by invite. So let's invite like-minded people so that we can get benefit from each other. And a lot of rewards are awaited, and we are soon launching Guftagu rewards. In terms of, we are getting good community rewards from different corporates and different brands for our community. तो बहुत कुछ आ रहा है. So we'll post you updated as and when we will move ahead. And top 10 ways to leverage Guftagu, कि देखिए जैसे आज आप आए वैसे ही रेगुलरली आते रहिए. 15 तारीख को हमारी फिजिकल गुफ्तगू है इन नोएडा. And then of course the calendar, will soon share the calendar on the chat box. And upskilling, जैसे we are having Guftagu mentors, our mentor coordinator, mentor captains are there to help you in terms of how to use this platform in a better manner. So each member is having a mentor here, and the mentors are being backed by mentor captains. So this is an entire system where we are helping each other and having the SMART goals, positive attitude. These are the basics which are required everywhere. Givers get more, circle of trust. So this is like we are helping you in creating circles of trust. And also we are having different communities. Like this is financial intelligence, same way we have leadership skills, we have got marketing skills, business automation. तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लाई गई है. और 1-to-1 मीटिंग्स भी ज्यादा करें, 1-to-1 गुफ्तगूस, so that we can help and also take a role. As and when you take a role, like you can invite the speaker, you can become a mentor. So जैसे ही आप रोल लेते हैं, विजिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है. तो जो अकाउंटेबल होता है वो दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है. तो ये सिंपल है. अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. हम सबका इंट्रोडक्शन हो जाए एक बार. तो लेट्स हैव स्मॉल इंट्रोडक्शन, बिकॉज सचिन जी इज वेटिंग फॉर
his deliberations also. तो आज हम small introductions अपना करते हैं. It should not be more than say 45 seconds. You can share your name, profession, USP and your hobbies. Hobbies जरूरी है because we are here to understand, to know each other as a person. So like I'll start from myself. So my name is Rahul Jain and we help in making good people better and better more so by leadership development and by helping them in achieving measurable results. So I am the founder of Guftagu and Business Learning, and my hobbies are like this is one of my hobby, equity research. That's why we are here, spiritualism, coaching, and also doing Guftagu with all of you. So thank you. And now we'll have introduction one by one. So I'll invite first of all Siddharth joined. So Siddharth Jain can share his intro. And then we'll have Siddharth Gupta. Both the Siddharths have joined early. So yes, Siddharth. So you can share your good introduction. evening, everyone. Yeah. My name is Siddharth Jain, and my company name is Trishika Marketing Company. So we basically cater for packaging industry, and we supply duplex board and SBS boards to offset printers and box manufacturers. So our industry is we basically caters to the persons who make shoe boxes, cutlery boxes, and bakery packagings and all. And we have another vertical also, which basically caters to the startup industry. In that, we provide them startup mentoring, counseling, consulting, proper hand holding related to the ideation stage to till it goes for IPO. So you can share your hobbies also. Yeah, my hobbies are I like to play cricket. I travel. I travel frequently to different places, and recently I come across to my newest hobby, which is networking and meeting new people. Wow, interesting. Very good. So that's why we are here today together. So Siddharth Gupta, now you can share your intro. So hello everyone, I'm Siddharth Gupta. I'm a second generation entrepreneur running the business of homestays from Hi-Fi Socially Farm and Bits Kasoli. So from last 14 to 15 years, and till now we have served 100 plus clients in our property. And our USP includes privacy, homely feel, comfortable stay to our clients. And my hobbies will include driving, listening to the music, dancing, playing lawn tennis, exploring new places, and meeting new people in Guftagu. Thank you so much. Great to know about you. Now I'll request Mr. KP Singh. He can introduce. Thank you, Rahul ji. Good evening, everyone. So my name is KP Singh. I'm founder and CEO of borgerp.com, where we are helping business owners to put their business on autopilot mode so that they can run their business remotely, as well as they can set up more businesses and they can travel while their business keeps running well and in growing mode. My hobbies are doing yoga and daily and meeting with the like-minded people, helping business owners. That's it. Thank you. Great that you like to help business owners. That's great to know. Now Sandeep ji is also there with us. Sandeep ji, you can share your introduction. Sandeep Jain. Yeah. हमारे JBN's North Delhi convener. Yes, Sandeep ji. Yeah, hello everybody. Myself Sandeep Jain. I'm basically into the business of textile, wherein we are channel partners for various international mills, and we are a kind of distributors for the Northern India region, where we supply fabrics to all the boutiques, all the retailers, and all the fashion designers across Northern India. And my hobbies are like music, and because my business drive me to do a lot of travel, so I've started loving traveling as well. So that's for compulsory hobby. And then I love meeting a lot of new people with the same mindset, and I love spending my time with spiritualism and yoga.
a lot. Thank you. Wow, great to know about you. Now we are having Rajesh ji. Yes, Singhvi ji. जय जिन सभी को और I'm Rajesh Singh from Jaipur. Basically, we are in road construction material like bitumen, thermoplastic paint, and the glass bead. And which is our USP is glass bead. We are manufacturer as well as the exporter of that particular product. And as my hobby is, so I'm part of Bharatiya Jain Sangatana, Lions Club, Cheeto, BNI, and as well as Rotary. And thank you, Rahulji, to add me in this Guftagu. Thank you very much. Thank you that you are here today. Induji is also there with us. So Induji, please you can share. हमारे champions की president हैं. She is truly a champion. Yes, Induji. Thank you for such beautiful words, Rahul. Jai Jinendra Sabhiko. I'm Indu Jain. I'm a financial advisor and I help people with their tax saving, their financial planning, protection, child education, retirement planning. और आजकल जैसे आप सभी लोग जानते हैं निर्मला जी ने एक लॉ लाया है कि 1 अप्रैल के बाद आप कोई भी पैसा इंश्योरेंस में डालेंगे तो अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होगा तो रिटर्न्स टैक्सेबल होंगे। तो अभी तो आई एम जस्ट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ दिस। सबसे ज्यादा काम यही चल रहा है लोगों को अवेयर कराने का। एंड एज पर माय हॉबीज आई लव रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स एंड स्पेंडिंग टाइम देयर। Thank you so much. Thank you. Now we are having Dipesh ji. Yes, Dipesh Mutta ji. Okay, we'll come back to him. Arun ji is also there. Arun Jain ji. Okay, Sheel ji, आप अपना introduction दीजिए. Oh, sorry, just one moment. Hi, hello everyone. I am Shreel Lunkar. We are into the business of printing and publicity material. So we do all sorts of printing. Our USP being we are into this trade since the last 55 years and counting. And we do all sorts of printing, quality printing at reasonable prices. Hobbies include socializing, long drives, and that's these are the prime hobbies. And इतना ही करना है ना इंट्रोड्यूस तो राहुल जी। हाँ, लॉन्ग ड्राइव पसंद आ गया मुझे. I will go. Yes, Right. Pooja ji is also there. Pooja, Miss Pooja, you can introduce. Yeah. Hi everyone. My name is Pooja Jain, and thank you, Rahul, for making me the part of this Guftagu. This is my very first meeting with you all, and I am by profession I am a dietitian, and basically my company name is Pito Food, and I make diet plans for all type of medical and non-medical issues. Everything you can go from home, like as we are Jain over here, Baniyas over here, so everything ghar ka khana, no fancy foods from my sides. And I love driving, I love making friends. I love doing networking after being the part of this BNI and this JBN. So that's it from my side. Great. घर का खाना से ही आप वजन कम करा देते हैं. That's really great. So Arun ji is there. Arun ji can share his introduction from Jaipur. Myself, Arun Jain. Thank you, Rahul ji. I'm into manufacturing of steel. We are into manufacturing of TMT bars, octagonal high mass pole, telecom towers. We are also into concrete products. So basically, राहुल जी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये इच्छा रहती है कि इनको राहुल जी की बात को सुने और इनके प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं. So thank you for your love. And Nitin Goyal ji is there with us. Yes, Nitin ji. Yes, Nitin ji, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार देखिए.
So आप जितने adjust करते हैं, I will invite Priyanka. You can also introduce CA Priyanka Jain, Guftagu co-founder. Yes. Please unmute. Unmute करिए. Yes. Jai Jinendra, everyone. By qualification, I'm chartered accountant. I'm pursuing my passion. So I'm a relationship building and networking coach and co-founder of Guftagu. So I'm happy to be part of this platform where we provide people to develop deep bondings. And as far as my hobbies are writing poems, singing, and that's all from my side. Thank you so much. And if anybody is left out, we can have another round of intro at the end. So I will now invite Sachin ji to share his words of wisdom. And before coming officially, I'll share an official introduction about him. That is, Sachin ji is a hands-on financial advisor and he is brilliant in his approach. देखिए उनको मैंने एक बार ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया and he is there with us and that shows his passion to help people, passion to help the community in terms of wealth creation. So that's really great. He's the managing partner of Scrip, which is one of the best wealth management companies in India. And his areas of expertise include stock market investing, trading strategies, and he has worked across with MNCs and also Indian MNC banks like HDFC Bank, ABN AMRO, Citi, all the big names he has worked with, Stanchart, and many other areas he has worked. Now, so he left his corporate stint few years back in 2015, and he found Money Gain, and at that point of time, he successfully ran, and with more than 1,000 crores of AUM he managed, and then he actually ventured with Scrip, which were recently, and merged his business with Scrip to make India's biggest wealth management franchise. So, and he's humble and soft-spoken, and in his leisure, he loves to spend time with his family. So now I will invite Sachin ji to take it forward. I'll just share his presentation also. So yes, Sachin ji, please. Oh, thank you, Rahul ji, and it's just been my pleasure to be with all of you, and I can see some familiar faces. So first of all, thank you to you and Paryushan Ashwani bhai to extend the invite and allow me to meet with such a gracious audience. So yeah, so friends, these days it's a trend to attend these financial advisory sessions, and much of the advisory and learning is happening on YouTube rather than actually going through the grind of understanding what financial markets are all about. So, because we are a startup, the way we introduce ourselves as a Scripbox is that we are wealth managers with a digital DNA and a human touch, helping our customers attain financial freedom effortlessly. So, having worked for almost 20 years in the financial markets and now being part of the startup ecosystem, the first thing that we have kind of learned always is what is the problem statement. So can I get to the next slide? So we are here you've given me 30 minutes of your life. I would just want to make it most productive and participative by all of you. So please make use of the chat box and help me understand what is your problem statement when it comes to wealth management. I was hearing some of the comments coming over that, I don't have a thorough understanding of finance. Somebody said, I don't know much about accounting. So I thought this session will be useful for me to understand. Someone also mentioned that they have a lot of wealth managers coming to them,
but they thought, let us figure out what is new happening in the industry. So yeah, can I have some shares? What is the problem statement? What brings you to this session? What is it that you're expecting us to solve for you today? How can I make this 30 minutes most productive for you? So my intent is to how can I maximize my wealth? Okay, thank you, Rahul. Any of you can raise your hand. First three people will get the opportunity to ask your challenges regarding this. Siddharth has raised his Siddharth. hand. Yeah. Yes, Siddharth, please. So, sir, actually earlier I didn't have any knowledge about how to increase my shareholdings. Since I deal into shareholdings as well, and I want to know like how can we increase our shareholding? At what time we can purchase shares? Like I don't have any knowledge about it. I have zero knowledge about it. So I think you will be able to help me out in this regard. And also, in what sense I can invest so that my earnings increase for my future. So this is my question. Thank you, Siddharth. Got it. Yeah. Rajesh ji is also there. He raised his hand. Please, Rajesh ji, come up. Yeah, Sachin ji, does relate to same thing. I am just new. I am the beginner in this. So how can I start with, and just to make sure that in which I am in which I have to invest, so I will get the maximize my wealth. Okay, thank you, Rajesh ji. Thank you for that share. One more sharing we can take, sir. Pooja Jain is there. Yeah. Sachin, basically the same questions like where to invest, how to invest, which company is better, from where we can get the good results, and like why we should invest. The main question is why we should invest. So Wow. that's a wonderful question. Thank you. So yeah, I mean, I have a bit of disappointment as well as a bit of surprise for you. I think I read your mind. So if you go to the next slide, we all are very clear that we don't want to become the market expert, but we want to be financially aware to an extent that we are able to take wiser decision, making it easier for us and more confident of what we are doing. Okay, so aspirationally in whatever field that you are, this is what is coming out of your sharing, that you want to be more confident, and the decision making should be much easier for you. But in the next few slides, to solve for a financial investment decision is a much lengthier exercise. No, I want to, yeah. But what I want to discuss today is to give you a framework which can help you derive your own path to success. As they say, that if you give the bread to the, needy, you will feed him for the day. But if you teach the needy how to prepare the bread, you will teach him for life. So that is what I'm trying to deliver over here. Next slide, please. So, like I said, a lot of us would have attended a lot of sessions which would talk about how you should go about investing into stock markets, what are different trading strategies, what does it mean for investing into mutual funds, what are goal-based investing, etc., etc. If I can have in the chat box some share. How many of you have heard the term asset allocation? Don't put all your eggs in one basket. Just yes. Just type yes in the chat box if you've heard. So Siddharth, Ajay, okay, there you go. Okay. How many of you have heard of retirement planning? How many of you have heard of value investing? Okay. So to a lot of people who said yes, how many of you are applying it in your day-to-day
investing decision? Are you applying it in your investing decisions on a day-to-day basis? Okay, Sandeep ji says no, not much, not exactly. Okay, thank you. This is extremely grateful of you to have shared so honestly. Next slide. So just park it over here. While we understand the concepts, okay, we have heard about them, we have learned about them, but when it comes to application, we seldom apply them to our daily practice. And therefore, let me begin this with an adage. You only have to do a very few things right in your life, so long as you don't do too many things wrong. Okay, so it's not about earning money, it's about preserving or savings that will help you grow your wealth many folds, and I will come in the following slides to talk about more about it. So traditionally, if you take me to the next slide, there are three strategies or three major stages in any individual's life. Yeah, you can go ahead. Accumulation, growth, and withdrawal. Okay, and this creates three basic characteristics of a saver. Either you will be in a wealth creation stage, or you are in a wealth protection stage, or you are in a wealth preservation stage. And traditionally, we know that if you're in a creation stage, you should be investing more into equities. If you're in a preservation stage, you should be investing more into debt. So this is the copybook learning. But we are in a digital age. We are in the age of data, information. So how is it that we should apply these traditional learnings into our new age investing? And how should we derive a governing framework for us to be able to benefit out of wealth management? So next slide. So I'm going to talk about over here the philosophy of life. Okay, what we have learned so far. So when it comes to Mahabharata, the famous story from Mahabharata is that when Arjun and Duryodhan went to Shri Krishna, and while he was sleeping, and when he woke up, he said, what is it that brings you over here? So उन्होंने बोला कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है, and we wanted to come to you and ask you for help. So he said, yes, tell me, how can I help you? So Arjun ने कहा कि मेरे को तो आप चाहिए. Versus that, Duryodhan asked for his entire Sena, and we all know what happened. And it was in the vision of Arjun to have asked Shri Krishna to be his, Sarathi. So therefore, we strongly believe that, in things that we are not masters, and if there is somebody who can help us, we should definitely seek help. So that's our core philosophy. And now I will take you through some of the challenges that we face while designing a framework. So yeah, next slide, please. So why do we need a framework? Okay, because in investing, actually, you don't need a stratospheric IQ. You don't need an unusual business insight, or you don't really need an inside information. That would be helpful for you for a quick gratification. But to be able to build a successful investing journey for yourself, what is needed is a sound intellectual framework for decisions and the ability to keep emotions from corroding that framework. It's very important for you to understand this. कितनी बार होता है कि अभी भी जब आप लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे, तो हम ये बात बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा स्टॉक मैं खरीद सकूं, या ऐसी कौन सी जगह मैं इन्वेस्ट कर सकूं जिससे मेरे रिटर्न्स बेटर हो सकें. How should I get more out of my investment decision?
and Pooja actually brought a very important framework as to why I should be investing. Okay. And this is where the framework building actually comes into play, because आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, 2 बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, 3 बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट उसी के साथ साथ आपके फेलियर्स भी होंगे. ओके. एक फ्रेमवर्क अप्लाई करने में आप अपने फेलियर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क आप जब बनाते हो तो उसमें आप रिस्क को भी एडजस्ट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन डिजाइनिंग योर ओन फ्रेमवर्क. और फ्रेमवर्क क्या कर रहा है? फ्रेमवर्क आपको डिसीजंस लेने में मदद कर रहा है. फ्रेमवर्क आपको इमोशंस को अलग रखने में मदद कर रहा है. और ये मदद क्यों जरूरी है, ये अगले 6 चैलेंजेस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसमें आपको मैं बताऊंगा. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. I would like to come to this slide towards the end of my presentation. I think given the audience here, it will be more relevant for me to talk about it then. Now, the first challenge is having an open mind. You know, every time when you are approaching an investment decision, do you have an open mind? Ask yourself. Okay. Because whenever we are approaching a problem, we always have some or the other frame in our mindset which is working against it. Okay, so the first challenge is to come with an open mind. Why is this approach important? Because there is no one single theory that fits for all the problem. When we are talking about an investment approach, there is no single theory which will apply successfully for everyone. Okay, there's no one size fits all. अगर ऐसा होता तो वॉरेन बुफे का फॉर्मूला सबने कॉपी कर लिया होता and everybody would have made a lot of money. But that's not the case. We have realized that a strategy which is working for someone else, it doesn't work for us, and vice versa. Okay. Plus, different time frames or different market conditions or different economic cycles require different solutions. So it can't be the case that you will keep applying the same theory, the same practice again and again to to different complex problems. Therefore, having an open mind helps you first and foremost identify the problem. Okay, so keep an open mind. That is our challenge number 1. It's very easier said than done, but more often than not we don't have this. Challenge number 2, the next slide, is a belief system. Okay, I often hear this from investors that यार equity markets अपने लिए है नहीं यार, जब भी लगाते हैं तो नुकसान लेकर के ही आते हैं. ये स्टॉक मार्केट तो अपने को समझ में नहीं आता है बॉस. जब जो स्टॉक हम खरीदते हैं वो गिर जाता है, जो हमको पता पड़ता है और हम नहीं खरीदते हैं वो बढ़ जाता है. These are so common feedbacks that I keep hearing from a lot of investors. And then what happens is that our experiences in the past and our knowledge about a particular subject from the past, our our personal experiences or our experience from our family or friends, etc., builds those belief systems. Okay, in a ever-changing world, it is extremely important to challenge those belief systems. Okay, because if you're not, if it is very difficult to challenge the belief system, and but unless you do that, you will not be able to discover the real benefit of investing. So a case in point is bitcoins. A lot of people
did not invest into Bitcoin for a longest period of time. But when it started to swing up, it almost grew 10x. That is when everybody got fancy of investing into Bitcoin. In fact, there were certain apps. I think IPL 2021 was, or 2022 was all sponsored by these Bitcoin companies only. Okay, and the entire world was investing into Bitcoins. Okay, just because of these misconceptions and strong belief system. जो monkeys see and monkeys do, हम दूसरों को देखते हैं और वो काम करते हैं. And today, I mean, just last week, the biggest company who funded the Bitcoin exchange went bankrupt. So these are challenges, which is, I mean, if somebody would have just gone back into understanding the nitty-gritties of what investing into Bitcoins is all about, questioned their belief system, they would have known what mistakes or what sound decision making they are getting into. The third challenge that we face actually is wrong asset allocation. While we all understand asset allocation is important, knowingly और unknowingly भी हम ये काम करते हैं. हम कभी भी अपना सारा पैसा एक बैंक अकाउंट में भी नहीं रखते हैं. हम 3 से 4 बैंक अकाउंट में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, जबकि टेक्निकली इट्स द सेम एसेट क्लास. ओके, बट we may I mean, the cost of making a wrong asset allocation is that we may get a smooth landing but at a wrong airport. Okay, this is extremely interesting to understand. So take for an example, अगर आपको 10 लाख रुपया चाहिए 5 साल में और आप 50,000 रुपए महीना सेव कर सकते हैं, तो एक साल में आप 6 लाख रुपए सेव करो, तो यू नो आपको कितना टाइम और कितना रुपया चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए. ओके, बट इस जर्नी के दौरान अगर कुछ उथल पुथल हो गई किसी भी एसेट क्लास में, तो आपका जो लैंडिंग है वो आपके गोल से हट के कहीं और होएगा, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. और यही होता है कई लोगों के साथ, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बहुत फ्रेंजी था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के. in the period of 2005 till about 2009-11, a lot of people fancied investing into real estate, especially the Noida belt. Okay, and we all know what happened. For longest time they were not able to earn anything. In fact, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे पैसे स्टक हैं ऐसी transactions में. Similarly, on the contrary, there were people who were conservative by nature. So conservative का मतलब है कि वो केवल फिक्स्ड डिपॉजिट चूज करेंगे. तो लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ जाके करा? जेपी एसोसिएट्स, दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल्स, जहां पर थोड़ा सा 2-3% का ब्याज ज्यादा मिलता था. एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री नाउ व्हाट हैज हैपेंड. सो व्हाइल asset allocation is extremely important, a judicial play of doing that asset allocation is extremely important for you as an investor. जो भी आप फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे उसके अंदर इसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो जर्नी है वो प्लेजेंट भी हो और आप सही एयरपोर्ट पे लैंड करें. चैलेंज नंबर 4, नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, so this is the most this is my favorite actually, because the Pareto principle, we all know 80% of the time we are investing into resources which are not productive, and this is what happens with most of the investing decisions. Rather than focusing upon having a sound framework, we invest a lot of time in finding out which security will benefit the most. Okay, so एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ. कहीं पे भी आपको अगर रिटर्न अच्छा चाहिए, उसके लिए 2 ही चीज जरूरी है. या तो आपने जो एसेट खरीदा है वो बहुत सस्ता खरीदा हो, ओके, या फिर
आपकी मार्केट टाइमिंग बहुत अच्छी रही हो. ओके, सो either you have, I mean, whether it is the case of property or stocks, अगर आपने बहुत प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी है, चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इज वेरी हाई. और अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी है, तो चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इज एक्सट्रीमली हाई, एंड वाइस वर्सा. नाउ it's extremely difficult to find out that one security which can make you a lot of money. Okay, because यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है. आप कोई भी स्टॉक को स्टडी कर लीजिए, किसी भी एसेट क्लास को स्टडी कर लीजिए, हर एक के जर्नी में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. यू नो, एंड यू कैन जस्ट गो आउट एंड वेरीफाई. सो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, ओके, कैन समबडी गिव मी सम नेम्स. इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ PNB और SBI. Okay, thank you. SBI. I'll take SBI. Okay. So Nikhil, yes, you're right. SBI is the biggest bank of the country. Still, everybody is naming HDFC because HDFC made you a lot of money. Okay. So and not SBI. So the story of SBI is कि 2007 में जब SBI ने अपना टॉप बनाया था एज अ स्टॉक, उसके बाद 12 साल तक वो स्टॉक कहीं नहीं गया. 12 साल तक, जबकि बैंक खत्म नहीं हो गया. बैंक में एनपीए जरूर हुए थे, बट इट वाज स्टिल ग्रोइंग एंड एट अ रीजनेबल पेस, एंड इट कंटिन्यू टू ग्रो. ओके, सो 2007 से लेकर के 2019 तक एसबीआई का जो स्टॉक प्राइस है वो केवल 3.5 गुना बढ़ा था. 3.5 गुना. ओके, और 2019 से 2022 तक ये स्टॉक 5 गुना हो गया. Okay, now the point that I want to, or one of the classic example that we all keep talking about is Adani. No, who knew what Adani can become, almost growing 100 times in certain cases, and then what happens? Suddenly something happens, and in 4 days, 50% or 60% of that wealth is lost. Okay, now the case in point is, हम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस चीज के ऊपर कि हमें नेक्स्ट अदानी मिल जाए या हमें नेक्स्ट एसबीआई मिल जाए जो अगले 3 साल में या 4 साल में 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा. एंड अनफॉर्चुनेटली, आई वुड से अनफॉर्चुनेटली, वी रिलाई ऑन मार्केट एक्सपर्ट्स टू टेल यू दैट. आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये बात पता हो कि ये स्टॉक अगले 2 साल में 4 गुना या 5 गुना होने वाला है, तो मतलब आई विल बी अ लुनाटिक कि मैं यहाँ पर ये वेबिनार कर रहा हूँ या लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस बांट रहा हूँ. नो, मैं तो खुद वो स्टॉक लेकर के आई विल बी मोर देन हैप्पीली सेटिस्फाइड विद दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो माय पॉइंट इज, फैक्चुअली नोबडी नोस कि क्या होने वाला है. किसी को नहीं पता. We are only trying to make a calculated guess about what is likely to happen in future, and that is the reason why diversification helps. वो एसेट एलोकेशन वाली बात जो अभी पीछे करके आए हैं, वो इसीलिए करके आए हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी एसेट क्लास कब कैसे परफॉर्म करेगी, तो आपने अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके, सो जब आपने डाइवर्सिफाई कर दिए, तो एक जुडिशियल डाइवर्सिफाइड प्ले इज मोर देन सफिशिएंट. आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें डिजाइनिंग योर फ्रेमवर्क, बट वंस यू हैव दैट फ्रेमवर्क, keep bettering on your framework rather than wasting time on security selection and redesigning these strategies. It's absolutely a waste of time. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे किसी इन्वेस्टर ने मुझे समझाई, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि यार पैसा ना अपने धंधे से ही बना सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे वो आता है, और मेरे पैसे को सेव कैसे करना है, नुकसान नहीं होने देना है, वो तुम्हारा काम है क्योंकि वो तुम्हें आता है. मेरे को, जो मैं तुम्हारे को पैसा दे रहा हूं, मुझे उसको ग्रो नहीं करना है 10 टाइम्स.
वो मेरे को अपने धंधे से मिलता है, मुझे आता है, बट यहां से जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं साइड में रख रहा हूं फॉर द रेनी डेज, that is what I want to protect, and I don't want to bring that money to any kind of risk. Okay, so that I don't have to invest my time worrying about what's happening over there. Okay, so therefore using your time judiciously is extremely important. Focused, 20% of your time should be helping you derive 80% of the result, and not vice versa. Okay, the fifth challenge that we face is the psychology and temperament, and this is extremely important. Okay, uh, fear of missing out, FOMO. This is one word that became the rogue in social media the whole of second half of 2020 and 2021. Markets fell, और उसके बाद मार्केट एक झटके में भाग गए, और उसके बाद कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया. उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट. ओके, ये हमारे साथ आई जिंदगी में हर समय होता है. ओके, बिकॉज जिस सर्कल में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, यार मैंने ये खरीदा था, ये 3 गुना हो गया, इसको खरीदा था, इसमें मेरे इतने पैसे बन गए, एंड देन यू आर थिंकिंग, यार ये सारी दुनिया तो पैसा बना रही है, मैं ही एक बेवकूफ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. और दूसरा, हाइंडसाइट एडवांटेज. नाउ ये हाइंडसाइट चैंपियंस जो होते हैं ना, सबसे खतरनाक होते हैं, बिकॉज जिस टाइम डिसीजन लेना होता है उस टाइम कोई डिसीजन नहीं लेता है, बट जब वो इवेंट प्ले कर जाता है तब कहते हैं, यार देखो मैंने कहा था. Then what to do? I mean, classic case in point is, आज 1 साल के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है फ्लैट. स्टॉक मार्केट इज नेगेटिव. निफ्टी एंड सेंसेक्स इज नेगेटिव इन 1 year पीरियड, फ्लैट टू नेगेटिव. ओके, इसका मतलब है लास्ट मार्च में अगर आपने पैसा लगाया होगा तो वो 100 रुपए के 99 रुपए होंगे, या 100 रुपए के 101 रुपए होंगे. ठीक है, उस टाइम पे ब्याज दर थी 4%, 4%, 4.5%. Okay, are you with me? One of the pitfalls of doing a webinar is it in between feels like you're only talking to a screen. Yes, please go We all ahead. are thinking so. Okay, thank you. So अब आज अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई how was your journey, तो कहता है यार बेकार है बॉस, बैंक में एफडी करा देते, आज अगर एफडी करा देते तो 7.5% मिलता है, 8% मिलता है ब्याज, स्टॉक मार्केट में तो कुछ नहीं आया. दिस इज हाइंडसाइट विजडम. ये भूल गए कि लास्ट ईयर 4.5% होता था. अगर एफडी में रहते तो निकाल भी नहीं पाते पैसा दोबारा रीडिप्लॉय करने के लिए. एटलीस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी आपको मिल रही है, बट यू कांट हेल्प इट. सो हाइंडसाइट एंड रिग्रेट plays a lot of role on your mindset and your investment decision making. Okay, इसका विपरीत है ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, आप किसी बड़ी पार्टी में या किसी प्रमोटर से मिले और उसने अपने बिजनेस के बारे में 4 तारीफ कर दी और बोला कि मैं यहाँ ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ ये कर रहा हूँ, और ऐसा बड़ा धमाल होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, एंड यू आर देन ओजिंग इन ओवर कॉन्फिडेंस, एंड देन यू डिसाइडेड कि यार बस अगला मेरे को अदानी मिल गया है, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड दैट ओवर कॉन्फिडेंस अगेन give you detrimental results. Optimism, while we all know that India is a structural growth story, we are in a structured bull market, but within that also, even in a structured bull market, you will get corrections. Okay, if you're over optimist, you will fail in designing a winning strategy. Okay, and framing. Past experiences builds a certain frame of mind which restricts us in judicial decision making. So therefore we have this is our biggest enemy, because unfortunately
nobody can tell us about these things. ये हमारी खुद की हैबिट्स होती हैं जो हमारे ऊपर ओवर प्ले कर रही होती हैं. इनको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई एक बहुत कॉन्फिडेंट चाहिए जिसकी बात आप सुन सको और वो आपको ऑनेस्टली फीडबैक दे सके, तो शायद आपको इन चीजों के बारे में पता पड़े. अदरवाइज आप गलतियां करके इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं. कई बार हम गलतियां करने के बावजूद भी इन प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं. I mean, there are so many people who end up making so much of trading losses but still continue to trade, and that's only because of this overconfidence and optimism. You know, someday we will end up making money. Name one option trader who has created a significant amount of wealth over a long period of time. Name one option trader जिसने 10-15 साल में 20 साल में ऑप्शन और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया. You will not get a single name, but you name one value investor जिसने बहुत पैसा बनाया, you will get a several names on your mind immediately. Okay, so this is the power of framework. Okay, all these investors have designed a particular framework and they work on that framework. If they have this framework, this psychology and temperament will not play on their mind and they will be guided by that framework. The sixth challenge and the last one is judgment. Okay, this is a slightly technical one, but I will still try and simplify it. So judgment is coming from some of the experiments that or some of the frameworks that we would have tried. Okay, so जो हमने गलतियां करी हैं उससे हमारा जजमेंट बन जाता है. और इसको ओवरकम करने के लिए जो पहला चैलेंज है, हैविंग एन ओपन माइंड, इज एक्सट्रीमली important. So that brings me to the next slide. You know, judgment. Yeah, if you can take me to the next slide. No, previous one. So good judgment is the result of, no, slide after this. Yeah, good judgment is the result of experience, and experience is the result of bad judgment. So this is the baggage from history that we draw. It's extremely important कि आपके जो bad judgments हैं उसको आप अपने experience में build करें और वहां से आपके good judgments deliver होंगे. Can you take me back to the slide of the framework? Having learned about these challenges, you know, I would like to bring forward a winning framework in front of you. Okay, so अगर आपको अपना पैसा मैनेज करना है, if you have to invest your wealth, okay, this is the universe which is in front of you. There is global macroeconomic issues and opportunities, I must say. Okay, so global macro में primarily आ गया interest rates, inflation, GDP progress, demand supply, balance of trade. You know, आप जितना उसमें जाते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी. And India as an economy is also part of the global macro. Okay, so you have the global canvas within which you have the sub-regions and one country such as India. Okay, we all know there are fundamental analysis. Fundamental analysis is all about understanding the background of and the quality of where you are investing. So for example, if you want to invest into a company, आप जानना चाहेंगे कि उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका मैनेजमेंट की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की उनकी अप्रोच है, कैसे अपने वेंडर्स के साथ उनका बिहेवियर है, कैसा उनके एम्प्लॉइज के साथ बिहेवियर है, कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा है चीजों को लेकर के. ये सारी की सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है. इंडस्ट्री साइज कितना बड़ा है, उसमें साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या मार्केट शेयर है. ऑल ऑफ दिस will fit into the fundamental analysis. Technical analysis is study of price volume data. So price volume जिस हिसाब से market is basically a demand supply space जहां पर at every price point there is a certain level of demand available. Price गिर जाएगा, demand बढ़ जाएगी, price चढ़ जाएगा, demand
घट जाएगी. And therefore technical analysis in a way, study of technical analysis tells us कि अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमारे को ले जा सकता है. बिहेवियरल एनालिसिस, आप किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, बिकॉज इट्स वेरी इजियर सेड देन डन. कि हमें लगता है कि जब बाजार गिरेगा तब हम बायर बन जाएंगे, जब बाजार चढ़ेगा तब हम अपना माल बेच करके निकल जाएंगे. बट होता यह है कि जब बाजार बढ़ रहा होता है तो एक यूफोरिया बिल्ड हो रहा होता है, और यूफोरिया में माल बेचने वाले की सबसे ज्यादा बैंड बचती है, क्योंकि जिस दिन आप सेल करोगे उसके अगले दिन प्राइस ऊपर होगा, तो आपको लगेगा यार मैं जल्दी निकल गया. ओके, एंड देन दैट फोमो विल सिंक इन एंड यू विल एंड अप बाइंग. ऑन द अदर हैंड, जब बाजार गिर रहा होगा तो बाजार गिरने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल इज नॉट डूइंग वेल, इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम इकोनॉमी. तो अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है, तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी. वी विल नॉट बी लेफ्ट अनटच्ड. आई मीन, अगर कोविड हुआ जिसकी वजह से मार्केट गिरी, लॉकडाउन लगा, तो हमारे बिजनेसेस में भी इंपैक्ट आया. उस टाइम पे चाहे हमारे पास पैसा था भी, हम ये सोच रहे थे यार कल को हमारे को इतनी लाइबिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इन चीजों को प्रोवाइड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए. अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ी डालेंगे पैसे. So it's extremely important for you to understand your own behavior, because आप कितना भी अपने आप को झुटला लें, बट आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, वो आपके आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा. एंड देयरफॉर बिहेवियरल एनालिसिस टू माय माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल. And then the whole quantitative analysis comes into picture. This is again modeling, jahan par various models can be derived. For example, अगर हम गोल प्लानिंग की बात करें तो गोल प्लानिंग में अगर मेरे को रिटायरमेंट के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपया चाहिए, तो उसकी हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस बनाएंगे और उसको हम स्टडी करेंगे, and that will help us derive our roadmap. And rational analysis is extremely important, because यहाँ पर आप risk evaluation करते हैं. अगर आपने किसी पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करना है तो उसका रैशनल क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना है. जो हमें पूजा जी ने पूछा था कि हमें करना ही क्यों है, जब आप क्यों का जवाब दे रहे होते हैं तो उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स को दोनों को एक साथ इवैल्यूएट करते हैं. और जब जितना ज्यादा अच्छा आप उसके डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपकी बिहेवियरल रिस्पॉन्स होंगे एट द टाइम ऑफ दोस क्राइसिस, बिकॉज आपको पहले से पता है. Okay, so rational analysis is extremely important. With this, you will be able to derive a winning framework. ये जब आप फ्रेमवर्क बना लेंगे और इस पे काम करना शुरू करेंगे, तब आपके एक्सपीरियंसेस होंगे. उन एक्सपीरियंसेस से आपके जजमेंट डिराइव होंगे, और फिर आप अपने मॉडल को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जा सकते हैं. So with this, I will put to rest my session today. I just wanted to help you understand the importance of building a framework rather than giving you a framework. Okay, आप जिस भी एडवाइजर के साथ काम करते हैं, या आपका जो भी फॉर्मेट रहा है, उनको इन चैलेंजेस के अगेंस्ट स्टडी करिए, अपने को क्वेश्चन करिए, और आपकी जहां जहां आपको कमियां लगती हैं, आप अपने एडवाइजर के साथ या खुद उन कमियों को पूरा करें. And then stick to your framework, you will end up making a lot of wealth. So thank you so much, and open to question and answers. Really fantastic presentation by Sachin ji, and learned a lot about the framework and the challenges. So great presentation, great insights. So now let's have questions and any queries. Please raise your hands and we can
take your questions one by one. Sir, I don't have any questions, but thank you, Sachin, for such a useful and interesting knowledge about this financial. And definitely अब तो मुझे ये समझ में आ गया कि करना तो जरूर है, ये क्यों करना ये भी समझ में आ गया है, और किसके साथ मिलकर किसकी हेल्प से करना और ये भी समझ में आ गया है. So I thank you know, for I that. can understand. Thank you, Pooja. Thank you. Siddharth has raised his hand, so yes, Siddharth. Yeah, please unmute करिए. Yeah. Sir, I didn't understand the concept of asset allocation. Actually, my network was going in between, so I couldn't understand properly. If you can just repeat the concept of asset allocation. Yes, so Siddharth, thank you for the question. I was actually talking about the challenge that asset allocation brings. Everybody talks about asset allocation, कि आपको asset allocation करना चाहिए, right? But asset allocation का एक बहुत बड़ा challenge है कि अगर आप asset allocation कर रहे हो without knowing your destination, okay, then you will end up reaching a destination where you were not supposed to be. So therefore, even before reaching on the concept of asset allocation, you should also, I mean, within your framework, you should understand the objective of designing it at the first place. So, in a very simple format, let's suppose if you need 100 rupees to meet your goal, okay, and you have that 100 rupees with you today, but your goal is after 10 years. Okay, what should be your target? Your target should be, okay, what आपको क्या लगता है कि आपके लिए किस तरीके का रिटर्न इंपॉर्टेंट होगा? आपको 100 रुपए चाहिए 10 साल बाद, आपके पास वो 100 रुपए आज है, अब आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने कि आपको 10 साल बाद 100 मिल जाए, क्योंकि आपकी जरूरत 10 साल बाद है. तो आप किस तरीके से अपने रिटर्न मेट्रिक को डिफाइन करोगे कि आपका रिटर्न कितना होना चाहिए? सर मेरा रिटर्न एक्चुअली अगर जैसे मैं अभी 10,000 वो करूं, सपोज मैं 10,000 आई इन्वेस्ट एंड आफ्टर 1 ईयर, सपोज 1 ईयर और 2 ईयर. नहीं सिद्धार्थ, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे. आपको एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एक्सट्रीमली एग्जॉटिक हॉलिडे पे जाना है 5 साल के बाद, और उस हॉलिडे का खर्चा आज की तारीख में 25 लाख रुपए है. ठीक है, और आपके पास 25 लाख रुपया आज है, बट आप आज नहीं जा रहे, आपको 5 साल बाद जाना है. तो 5 साल के लिए पैसे को आपको कहीं तो रखना पड़ेगा. करेक्ट. ठीक है, अब आप जहां पे भी रखोगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ उसका अर्निंग्स आएगा. वो अर्निंग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट इज योर रिटर्न दैट यू विल टारगेट इन सच अ सिचुएशन? I'll keep, as you said, I'll keep in different accounts, invest in such a way that it is not been. I will allocate in such a way that so it's saved for my future trip, luxurious trip. That I think. आपका कोई रिटर्न का टारगेट होएगा कि इस पे कितनी रिटर्न आनी चाहिए? सर रिटर्न का टारगेट मुझे नहीं इतना आइडिया है, तो सर आप क्या what do you suggest? Okay, so this is a classic example, सिद्धार्थ. देखिए, आपके पास आज 25 लाख रुपए हैं, बट आपको इसकी जरूरत 5 साल के बाद है. ठीक है, नाउ आपको 5 साल के बाद आपकी जरूरत भी आपको पता है, एग्जॉटिक हॉलिडे. ओके, अब ये हॉलिडे क्या होती है, महंगाई के चलते इस हॉलिडे की कॉस्ट बढ़ेगी ना. करेक्ट. अगर आज 25 लाख है तो 5 साल बाद शायद सेम हॉलिडे के लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत हो. करेक्ट. सेम एग्जैक्टली जो आप आज बना रहे हो, सेम, राइट? तो आपके जो 25 लाख है वो 50 लाख होने चाहिए. अगर 5 साल बाद वो हॉलिडे 30 लाख में मिलता है तो 25 लाख 30 लाख होने चाहिए. आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो हॉलिडे चाहिए. हॉलिडे, करेक्ट. राइट. नाउ दिस इज योर एयरपोर्ट, बट आप क्या प्लान बना रहे हो कि मैं उसको इधर उधर एलोकेट कर दूंगा ताकि मेरा पैसा ग्रो हो. ओके, now with this allocation is called asset allocation. Correct. Okay,
this allocation can lead you to a different outcome after 5 years, which may or may not be in line with your expectation. So that is why it's a big challenge. हम अपने आउटकम्स को पहले डिफाइन करें, इसीलिए मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं कि आप अगर अपने आउटकम्स को पहले डिफाइन करेंगे कि इसका मेरा पर्पस क्या है, इस सेविंग्स का, इस इन्वेस्टमेंट का मेरा पर्पस क्या है, तो आपके जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए. Does that answer your question? Yes. Thank you so much. Sharing. Great sharing, sir. Any of you want to ask the question, please raise your hands. Sachin sir is here with us to share his knowledge. Any of you? So beautifully you explained everything, asset allocation, various challenges we are just facing in the stock market, and you have provided the framework, how we should go to technical analysis, rational analysis, fundamental analysis. So absolutely wonderful and very simple way and very accurately. Now we are just in the situation to take the decision whether we should invest in the stock market or not. So our all members are looking so happy and very satisfied. Rajesh, One hand I am seeing. Yeah, Rajesh ji wants to ask a question. Yes, Yes. Rajesh ji. There is some issue in network. I think he's on mute. Rajesh ji, आप mute पर हैं. Yes. Now Rajesh ji, go on. We Please. can't hear you. Volume नहीं आ रहा है, volume थोड़ा सा तेज करिए. Or you can write your queries on the chat box also. I think there is some voice issues. Rajesh, if you are comfortable, you just write your question. या आप ऐसा करिए, एक बार वापस से लॉग आउट करके लॉग इन करिए, तो आवाज नहीं आ रही ना, इस वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिच है. So we can take, we can take another question in the meantime. Let's take the another question. Anybody who wants to share or ask a question? Sir, one question I want to ask you. As you have just told that we should work on a framework, just keep the purpose in your mind, then you just start to invest or allocate in different assets. So long-term or short-term stocks are there. Short-term gain is there. So we are very tempted towards the short-term capital gains or the stock. So is there something very important if you are not expert, you are not able to analyze the things for short-term investment. So from whom we can take the guidance, or we should not, as you have suggested, ki YouTube is there or the people are just suggesting, experts are suggesting, but still there is a chances of mistake and risk. So is there any process to take the advantage of short-term capital? Yeah, so thank you, Priyanka. That's a wonderful question. And Sushrut also has a question. I'll come back to Sushrut's question after your question. So again, you see, like I was talking about the challenge number 6, which is the judgment, and usse pehle wala jo hai, जिसमें देखिए, you have to evaluate the risk. Okay. स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है शॉर्ट टर्म में, और आप इसको केवल स्टॉक्स से ही रिलेट ना करें. स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कमोडिटीज हैं, करेंसीज हैं, कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में रिस्क इनके साथ एक ही है कि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट्स हैं.
वोलेटाइल का मतलब है कि इनके प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, राइट। हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे मुझे 30-40% का इमिडिएटली गेन हो जाएगा। तो अगर किसी सिक्योरिटी की ये टेंडेंसी है कि 30-40% बढ़ सकती है, तो उसकी ये टेंडेंसी भी तो हो सकती है कि वो 30-40% गिर जाए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो आंसर इज यस, प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट। बट हम 30-40% गिरने के लिए तैयार नहीं है, बट केवल हमें बढ़ोतरी चाहिए, ऐसी कोई सिक्योरिटी बनी नहीं है। So that is why you could be lucky in making an investment decision to make a quick buck in the short run, but it doesn't work. At the same time, हमने ये देखा है कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या हमने किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करा है फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। अगर आप हमारे सेंसेक्स की जर्नी ले लें, 1987 से हमारा सेंसेक्स फॉर्म हुआ है, 100 रुपए से आज हम 53-54 हजार रुपए के मार्केट लेवल पर होंगे। मुझे सेंसेक्स की वैल्यू एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, अराउंड 59 है। हाँ, सो 59,000 है। तो आप ये देखें कि इस जर्नी के दौरान आपको एज अ नेशन करेंसी क्राइसिस भी हुआ, हर्षद मेहता भी हुआ, केतन पारिक भी हुआ, कोविड भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, नरेंद्र मोदी भी आए, मनमोहन सिंह भी आए, सब कुछ हो गया। और उसके बावजूद आप जो है 14% 15% की कंपाउंडिंग पर हैं, राइट। बट वहीं अगर आप देखें कि पिछले एक साल में क्या हुआ, तो पैसे नहीं बने। 2020 में क्या हुआ, मार्च में 40% का करेक्शन आ गया, लोग बाहर निकल गए, उन्होंने लॉस बुक कर दिया। तो एनीथिंग कैन हैपन इन द शॉर्ट रन, बट द मोमेंट यू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, you are reducing your risk. So therefore my suggestion is कि आप उसको जजमेंट में ना जा करके उसका रिस्क और रिटर्न दोनों को इवैल्यूएट करें, और एक होलिस्टिक अपना जब आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उस फ्रेमवर्क में आएगा यार इतना रिस्क मैं अलाउड हूं लेने के लिए, इससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। जब आप रिस्क नहीं ले सकते तो जब वो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, जब आप उस फ्रेमवर्क पे उसको इवैल्यूएट करेंगे तो कहेंगे ये तो मेरे में फिट ही नहीं होता है। तो आप अपना बचाव वहां से कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे वहां जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 करोड़ रुपए की कैपिटल तक हम उन्हें पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। हम उन्हें नहीं बोलते कि आप पीएमएस में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की होती है। तो हमारी बेस फिलॉसफी ये कहती है कि किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में आपका 10% से ज्यादा का एलोकेशन होना इज नॉट करेक्ट। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुरी कर गई तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हिल जाएगा। सो ये हमारा फ्रेमवर्क है। अब अगर आपकी टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस इज लेस देन 5 करोड़ और आप बोलते हो पीएमएस में इन्वेस्ट करना है, हमारे लिए क्लियर आंसर है, हमें उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, कितना भी अच्छा पीएमएस ले आओ, नहीं चाहिए। सो फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम टेकिंग अनड्यू रिस्क। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, yes. I got it. Risk appetite को देखना जरूरी है before investing in short term. Be ready for both sides. Thank you so much. Thank you so much. Any of you want to Sushruth has a question. He's asking any book or guiding light for various types of framework which others have built and made stronger. Yes, there are a lot of them. One of my favorite is The Intelligent Investor by Ben Graham, which was one of the favorites for any value investor. The latest one is from Morgan Housel, Psychology of Money. I would strongly recommend Psychology of Money, because it talks about behavioral aspect of investing. So we strongly believe that it is not the IQ, but it is the EQ which is important to be managed for making sound investment decision. And then the other part of your question is, it's better to build over a base rather than creating something from scratch. I don't agree with you, because you see,
behavioral bias has everything to do with how you have experienced your life over a period of years. And every human being is unique to that extent. And therefore, my job is even tougher as an advisor because I have to get into the skin of my investor and identify इनकी क्या requirement है और उसके हिसाब से हमें advise करना होता है. Similarly, किसी और का framework आप borrow तो कर सकते हैं, उस पर build करने की कोशिश तो कर सकते हैं, but वो conviction नहीं आएगी जो आपके खुद के framework से आपको मिल सकती है. तो आप जरूर आइडियाज बोरो करें, बट अपने आइडिया पे ही काम करें. अगर आप फ्रेमवर्क, सी दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज मनी बिकॉज दे डोंट हैव एन इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क. ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो. फाइनेंशियल मार्केट्स आर एजेंडा ड्रिवन. द एजेंडा इज टू सेल अ प्रोडक्ट. फ्रेमवर्क में कौन क्या बना रहा है वो तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी. बट इसीलिए अगर आपने बना लिया तो यू विल हैव दैट यूनिक ऑफरिंग एंड इन्वेस्ट इन डिजाइनिंग योर ओन फ्रेमवर्क. दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. आप देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना फ्रेमवर्क पहले ही बना देती है कि जो भी पैसा है वो एफडी में ही जाएगा. फ्रेमवर्क ही है ना. उन्होंने अपना स्टडी करा, अपनी स्ट्रक्चरिंग करी और डिजाइन कर दिया. सिमिलरली, you know, there are multiple characteristics which you can put around and build your own framework. So Shruth, I hope I answered your question. Thank you. Yeah, thank you, Sachin ji. Now I think Rajesh ji is ready. Yes, Yeah. Rajesh ji. Yeah, now is voice is clear? Yes, Yes, Rajesh ji. Yes, Sachin ji. So basically, just now आपने जैसे एक चीज कही कि framework, which is more important. तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पैसा लगा रखा है एंड आई जस्ट वांट कि मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जैसे इक्विटी से जब वो हाई हो गया तो मैंने उसको निकाल के डेप्ट में पार्क कर दिया. नाउ इट विल गेट यू मैक्सिमम रिटर्न्स. एंड मतलब ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि ओवर अ पीरियड टाइम मुझे 15 से 20% का एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ईयरली मिल जाए. सो इट मीन्स कि इन द नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स में वो पैसा कहीं ना कहीं मेरा विद द आप जो इन्फ्लेशन का जो रेशियो है उसके साथ में वो अमाउंट भी बढ़ जाए. बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर वो पैसा बढ़ेगा तो अमाउंट तो पैसा तो उतना ही है, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसा भी बढ़ना चाहिए. दैट इज माई क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एज अ लेमैन मुझे किस चीजों पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए एज एन व्हेन गो फॉर इन्वेस्टमेंट? सो बहुत ही अच्छा सवाल है राजेश जी आपका. आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं. ओके, एक आपने पार्ट रखा है कि जब मार्केट बढ़ती है तो आपका जो एडवाइजर है वो सेल कर देता है और डेट में मूव कर देते हैं पैसा, और जब मार्केट में करेक्शन आती है तो डेट से वापस इक्विटी में मूव कर देते हैं. तो यस, दिस इज पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क. ओके, नाउ द क्वेश्चन फॉर यू एज एन इन्वेस्टर इज कि जब वो मूव करना चाह रहे हैं पैसा फ्रॉम इक्विटी टू डेट या डेट टू इक्विटी, तो उसका रैशनल क्या है जो मैंने आपको लास्ट में बताया. उसका तर्क क्या है, क्यों मूव करना है. ओके, दैट रैशनल इज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, राइट. भाई मार्केट सिचुएशन विल डिफर बट द रैशनल विल रिमेन कांस्टेंट ना. भाई फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जब भी मार्केट का पी 23 के ऊपर जाएगा मैं इक्विटी से एग्जिट कर दूंगा, और जब 17 के नीचे आएगा मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूंगा. एक वैल्यूएशन मॉडल, मतलब एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है. तो रैशनल मेरा कॉमन रहेगा ना. बाजार चाहे निफ्टी चाहे 10,000 पे हो, 15,000 पे हो, 23,000 पे हो, डजंट मैटर, बट एज लॉन्ग एज द पी इज अबव दिस लेवल आई विल सेल. सो वो रैशनल मिल गया. अभी जब आप रैशनल पे क्वेश्चन करोगे तब आपको असलियत सामने आएगी कि फ्रेमवर्क विजिबल नहीं है और फ्रेमवर्क में कंसिस्टेंसी नहीं है. बेसिकली इट्स अ हंच, इट्स ड्रिवन बाय gut feel, and gut feel can go right also and wrong also. So you are taking tremendous amount of risk in the absence of not having a right framework. The second part of the question is कि 15-20% का रिटर्न आपको मिल जाए, and beating inflation is extremely important.
I completely agree with you. Okay, देखिए हमें जो है रियलिज्म के साथ रहना जरूरी है, ठीक है। आज रियलिटी ये कहती है कि जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो 6% पर है, 6-6.5% की रेंज पे इन्फ्लेशन है, ठीक है। जो आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में एफडी वगैरह में ब्याज मिलता है वो आज की डेट में 7.5-8% के करीब का ब्याज आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन सीनियर सिटीजन और नॉट एंड विच बैंक टू विच बैंक, बट एट एन एवरेज 7.5% का आपको ब्याज मिलता है। तो इन्फ्लेशन हो गया 6.5, 7.5 हो गया आपका रिस्क फ्री रेट, और इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9-9.5% के आसपास की आ रही है नॉमिनल। ओके, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है, जो कंपनियां प्रॉफिट बना रही है कलेक्टिवली एट एन एग्रीगेट लेवल, वो अब गिर के 7-8% पे वापस आ गया है, ठीक है। अब देखिए आप एक इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी का पार्ट हैं तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं के डेरिवेटिव्स में तो कहीं ना कहीं होएगा, या तो आपने बैंक में एफडी कराया होगा, या उसके इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट होगा, या स्टॉक मार्केट में होगा, या कमोडिटी में होएगा, या रियल एस्टेट में होएगा। तो उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है इन ग्रोथ नंबर्स से, राइट। अब अगर आप एक बहुत साउंड जजमेंट वाले इन्वेस्टर हो तो आप जो एक कॉमन मतलब 9% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है विच इज अ कॉमन ग्रोथ रेट, उसमें से एग्रीकल्चर कुछ लेवल पे ग्रो कर रहा है, सर्विसेज कोई हायर रेट पे ग्रो कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर जुडिशियल इनोवेशन, आप 9 की जगह 12 बना लोगे, 13 बना लोगे, 14 बना लोगे, राइट। यू विल बी एबल टू बीट दैट बेस रिटर्न, बट उसको कंसिस्टेंटली 18, 20, 25 पे ग्रो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, सो ये एक रियलिज्म है। अगर आप रियलिज्म पे बात करेंगे तो क्या होगा कि जहां पे आपको 18%, 20% की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप एक बार उसको क्वेश्चन करोगे कि भाई क्यों है, उसमें रिस्क मेरा क्या है, और अगर आपने रिस्क इवैल्यूएट करने के बाद अपना नुकसान बचा लिया तो आपने पैसा बना लिया। And this is what the framework will give you. Thank you, Sachin ji. It's really a mind eye opener things. Thank you very much. I just keep in my mind that is not possible because many of them, that financial advisor is always they are. I don't know how they get this kind of, they crack this percentage from where they are manipulating the minds. It's very simple thing because what they are showing in the picture. I don't think so. It's real or the real one. There is a small difference, real and the real. So I think this is the real one, and I understand this. Thank you. Thank you, sir. There is, I would say that there is a amount of realism over there as well. देखिए 90s से लेकर के 2020 तक की जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी एक अलग रियलिटी थी, 2020 से लेकर के 2050 तक की जो ग्रोथ स्टोरी होगी उसकी एक अलग रियलिटी होगी, राइट। तो अब जैसे कुछ मतलब आप अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें, एक निपॉन का फंड है, निपॉन ग्रोथ फंड, या आपका फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये जो जिनकी जो है आज से 27 साल 25 साल पुरानी हिस्ट्री हो गई हमारे सामने, इनके ग्रोथ नंबर 17-18% के रहे हैं। ओके, बट द फैक्ट इज वो 1995 में इन्वेस्ट करना चाहिए था और आज तक उसको बेचना नहीं था, तब तो आया है, बट वो बीच में ना मतलब 20%, 30%, 40% टूटा भी है। तो उस समय आपने क्या करा, राइट। तो वो फ्रेमवर्क अगर नहीं होएगा तो आप में कन्विक्शन नहीं आएगा उसको होल्ड करने का। सो आई विल नॉट ब्लेम देम ऑन शोइंग यू रॉन्ग नंबर्स, नो, दोज नंबर्स आर फॉर रियल, बट देयर इज अनदर रियलिटी टू इट आल्सो। Okay, so great insights from real to reality and reality coming back to real. So that's good. Sachin ji, I want to ask you a simple question out from the mutual funds. So what kind of mutual funds do you suggest in form of growth funds which you were talking about? If somebody wants to invest in growth in equity market in the long-term large cap companies, so what are some mutual funds which you can suggest to our investors?
So Rahul ji, जैसे ladder होता है ना, वैसे ही किसी भी asset class में भी further laddering है. So जैसे जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा. So bottom of the ladder starts with index. ओके अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो वो सेफेस्ट है, डाइवर्सिफाइड प्ले है. अगर इंडेक्स में 12% आया तो आपको 12 मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. फॉलोड बाय लार्ज कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, गोइंग अप टू पीएमएस, एआईएफ, इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग. ये लैडर है. अब एक इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में सिक्योरिटी बायस सिंक्स इन. मतलब आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मार्केट बढ़ गया बट वो स्टॉक नहीं बढ़ा, so you will miss out. You took the right decision of getting into the right asset class, but you missed out because your security selection was not accurate. So diversified allocation helps you mitigate this risk. Now, depending upon which classification of mutual funds you should select is a direct relation with the risk appetite and the time horizon that you have. The longer the time horizon, the higher the risk taking ability you will have. Okay. And then the other factor is that it's better to invest regularly rather than invest one time. बिकॉज जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट वैल्यू एवरेजिंग का. आप वैल्यू एवरेजिंग कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग की बाय कॉन्स्टेंटली बाइंग एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स. ओके, एंड अगेन दिस विल बी पार्ट ऑफ योर ओवरऑल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी. सो फॉर एग्जांपल समबडी हु इज ओनली ट्रैकिंग ग्रोथ, जिसको सिर्फ ग्रोथ से ही मतलब है, बाकी सारी चीजें all put together, in some sort of a framework, we think 70% allocation at this point of time into risky assets and 30% in risk-free assets is a good allocation. Okay, and we would like to maintain it for some time. So उससे होता ही है कि अगर गिरावट आई तो हमारे पास थोड़ा सा पाउडर ड्राई है जिससे हम एवरेजिंग कर सकते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए. सो उसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं. आपके गोल्स के पे डिपेंड करके, आपके टाइम होराइजन पे, आपके रिस्क एपेटाइट से पे डिपेंड करके एक एलोकेशन बनाया जा सकता है. बट हैविंग सेड दैट, पैसिव्स को हम बहुत ज्यादा इस टाइम सजेस्ट कर रहे हैं बिकॉज given the secular run, fund managers' ability to beat the benchmark is also very limited. So therefore, हमारे हिसाब से 30-40% allocation to passive, which is like investing into indexes, is a good strategy also. So brilliant inputs by you, Sachin ji. मजा आ गया. So it's like we can go on and on, but I know the time, we have limited time, and already हमारे 1.5-2 घंटे हो रहे हैं. So we can take one last question. Anybody having any questions? And of course, Guftagu is always there for the further connect. So, sir, we would like to see you in our physical meet also to guide our participants and members sometime whenever you will be available. Yes, Rahul ji is invited for the 15th Yes. of yes. Yeah, 15th of March at Noida, we are having a Guftagu. So actually, this is just opposite where you live. I know. That's why, yeah, I have already made a calendar note, and I would definitely try my best to be there. Yes, absolutely. okay, so it would be great to take questions, and number of people are interested. But Rahulji, I would suggest if Sachinji would like to introduce himself to complete the rituals of Guftagu. So just you share your hobbies with us also, apart from this financial intelligence. Yes, Priyanka ji. So
I'm an ardent fan of your singing. Oh my God. Thank you so much. And I think जिस तरह से आप जोश भर देते हैं सब में, it's a great talent. You know, there's something to learn. And of course, I share the passion. I also love to sing. You know, music is my passion, and I love to cook for my kids. Wow, that's great. So, would you like to sing something for us today? Okay, maybe on the 15th, we can keep it for the 15th. हाँ, ट्रेलर हो सकता है आज, पिक्चर उस दिन हम देखेंगे. अच्छा. तो आपने इतना अच्छा नमोकार मंत्र यू नो रिसाइट करा था, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ नमोकार मंत्र आपके सामने रखने की. प्लीज प्लीज. मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा. मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सब साहूणम. Absolutely wonderful. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, और you know it's was soothing. लग रहा था आप गाते जाओ हम सुनते जाएं. So we have so many people from different background also. So I would like to just share the meaning of this in a few words. कि यहाँ पे हम लोग भगवान के साथ साथ उन सबको नमस्कार करते हैं जिन्होंने लाइफ में मोक्ष को प्राप्त किया है, स्वरियंत हो, सिद्ध हो, चाहे जो हमारे गुरु हैं जो आज भी इतनी टफ लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उनकी भी गुड क्वालिटीज को हम इनवाइट करना चाहते हैं. हमारे उपाध्याय हैं, और इस वर्ल्ड में जितने भी अच्छे लोग हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छाई को फैला रहे हैं, फॉर सपोर्टिंग द नॉन वायलेंस, उन सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं. सो दिस मंत्रा इज बेस्ड अपॉन कि रेस्पेक्ट एवरीवन हु आर जस्ट गुड डूइंग गुड थिंग्स and take the good qualities from them. So that is the basic meaning of this mantra. So hope you all will love कि हम भी लाइफ में कुछ ऐसा करें. And again I would like to thank Sachin ji and all of you who are present here and taken the participation in this financial intelligence Guftagu. And it's really been interesting throughout the session. Not a single minute जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि we should go और you know अपनी eyes off करें. So बहुत ही engaging रखा आपने और काफी अच्छे से simple words में हमें सब कुछ समझाया. So that's great. Or we will like to see all of you again. Over to Rahul ji to conclude the session, please. Yeah, so thank you everyone, and I would especially want to thank our committee members. They are not here today because of their engagements. Mr. Paryushan Jain and Mr. Nilesh Jain. They both are committee members of financial intelligence. They, the man and persons behind this Guftagu. So want to thanks to them. I feel this has been really enlightening and काफी कुछ समझ आया frameworks के बारे में. And I think this picture has just started. अभी तो trailer ही है, movie पूरी बाकी है. So Sachin ji is there with us throughout. He will help us in future also, and many more Guftagus will come. Yeah, Anju ji has raised her hand. We can take her opinion at the end. Last, yes, Anju ji, you want to share something? The session was definitely good. Enjoyed. मेरे लिए आने के 2 reasons थे, राहुल जैन और सचिन जैन. Thanks to both of you. Thank you, Anju ji. It is your enthusiasm which is contagious. और हम सब लोग आप लोगों का जो समय आपने आज निकाला है वो बहुत बेशकीमती था, और आप लोगों ने आज
यहाँ पे आप लोग सब पधारे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नोएडा में। सो stay positive, stay connected, and want to thank you again, all of you. Thank you so much. Thank Sachin, you. very nicely done. Thank you, Great. Rahul ji. Thank you, Thank you. Priyanka ji, for such a lovely event we had and the discussion we had with Mr. Sachin Jain. Okay, bye. Take care.